Good morning, sir. Happy Independence Day, sir. A girls officer, sir. Good morning, sir. Happy New Year. Good morning, sir. He's the head junior wing the in charge. Yes, deputy headmaster साहब ने कुछ बोले ही राष्ट्रीय सल्यूट सल्यूट guest Mr. SP Singh Oberoi, and on behalf of the entire Punjab Public School Nabha family, a very happy Independence Day to all of you. May God give you a long, fruitful and a patriotic life. Bye. Go.
trustees, Sarbat Da Bhala Charitable Trust, to the 68th Independence Day celebrations. Born in Punjab in 1956, Mr. Singh started his career as an engine mechanic in 1975 and launched a material and construction company under the name Singh Sons. He shifted to Dubai in 1993 and transformed his dreams into reality by starting his own general trading company, Apex Group of Industries. In 2006, he built a fine replica of Taj Mahal in Dubai. A co-philanthropic and humanitarian by nature, at present he is presiding several NGOs, educational and welfare societies across India, and also enjoys the lifetime chairmanship of many associations. Actively working for the welfare of girl education and children with special needs, the Trust provides large financial assistance for mass marriage of girls, free medical checkups and improvement of infrastructures of jails, not only in Punjab but other parts also. Under his esteemed leadership, their trust has sponsored students from India and Nepal, have saved lives of more than 50 boys from death penalty and life imprisonment, and financed their visit back home, providing them air tickets. The list does not end here. Their trust acts as a lifeline for providing financial assistance to more than 70 educational institutions and societies, not only in India but overseas also. Their projects in pipeline include setting up of old age homes for cancer patients, open libraries and much more. At the end of 2014, Sarbat Da Bhala Charitable Trust plans to open 25 offices worldwide. Recipient of over 70 national and international awards for his selfless contributions to every sphere of human life, Mr. Singh Oberoi has recently been awarded the Sikh of the Year Award 2014 by Honorable High Commissioner of India, London. We are all admired. I now call upon the following students to share their thoughts and highlight the significance of the day. Anika Rai. जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है पशु मेरा और मृत्यु समान है। भारत का इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है। इस देश ने संसार के अनेक घटना चक्रों तथा उथल पुथल को देखा है। विश्व की अनेक सभ्यताओं का उत्थान एवं पतन देखा है। भारत पर हजारों वर्षों तक आक्रमणकारियों के हमले होते रहे और हमें गुलाम बनाते चले गए। इतना होने पर भी वे भारत का समूल नाश न कर सके। इन आक्रमणकारियों और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए हमें एक लंबा संघर्ष करना पड़ा, असंख्य बलिदान देने पड़े। पराधीनता से मुक्ति के लिए असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह, स्वदेशी का प्रयोग, नमक आंदोलन, किसानों का जागरण, मजदूरों का संगठन, विद्यार्थियों एवं सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन सर्वोपरि रहे। ये ऐसे आंदोलन हैं जिनका इतिहास साक्षी है, परंतु इनके अतिरिक्त भी ऐसे देशभक्ति के कार्य हुए हैं जिनका शायद हमें ज्ञान नहीं। अनवरत संघर्षों के पश्चात 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। कहने को ये तिथि है, परंतु इन क्रांतिकारियों से पूछिए जिन्होंने भारत को स्वाधीनता दिलाने में अपने पूरे परिवार को न्यौछावर कर दिया। स्वतंत्रता का आनंद उठाना आज हमारा अधिकार बन गया है, परंतु क्या हम इस स्वतंत्रता को कायम रखने की दिशा में ठोस कदम उठा रहे हैं? बड़े बड़े मंचों पर खड़े होकर लंबे लंबे भाषण देने से स्वतंत्रता कायम नहीं रहती। इस दिशा में हमें ठोस कदम उठाना होगा। देश के प्रति अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी को समझना होगा, तभी इस स्वतंत्रता का आनंद उठा सकेंगे। इस अवसर पर मैं कविता की चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी। भारत नी स्थान का वाचक गुण विशेष लड़का है, एक देश का नहीं शील ये भूमंडल भर का है। जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, देश देश में वहां खड़ा भारत जीवित भास्कर है। जय हिंद। Thank you, Anika. May I now call upon Shehbaz Singh to express his views regarding patriotism. ਲੱਗੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਫਾਂਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੂਰੀ ਖਵਾ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਤਦ ਹੀ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 200 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰਬੰਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਹਥਿਆਰਬੰਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮਿਲਵਰਤਨ, ਲੂਣ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਲਹਿਰ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲੋ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲਹਿਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੁੱਜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। करतार सिंह सराभा का भी साडे देश की आजादी में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। करतार सिंह सराभा भी अपने देश लिए कुछ एवं लाइना बयान करया करते सन। सेवा देश की जिंदड़ी बहुत औखी, गल्लां करनियां ही बहुत सुखनियां ने, जिन्ना देश की सेवा विच पैर धरिया उन्हां लख मुसीबतां झल्लियां ने। साडी राजधानी दिल्ली तो अलावा भी कई थावां ते इस दिन नूं बड़े ही धूम-धाम नाल मनाया जाता है। कई थावां ते हवाई जहाज़ां राहीं फुल्लां दी वर्खा कीती जाती है। ये दिन साडे लई बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए साडा भी फर्ज बनता है कि असीं इस दिन नूं खुशी नाल मनाइए ਅਤੇ देश की आज़ादी ਨੂੰ कायम रखने ਲਈ तन मन ਤੇ ਧਨ ਵਾਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ देश ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 67 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ देश ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗੜਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖੜੇ ਜਰੇ, ਆਖਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਗਹਿਣੇ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਧਰੇ। ਧੰਨਵਾਦ। I extend my heartiest greetings to all of you on the occasion of 67th anniversary of our independence. Independence was a watershed event in the history of our nation. Not only did we start to be governed under the Indian emblem, but we also began to play a major role in deciding the course of world events. Today, after 60 odd years, our nation has been recognized as a nation with tremendous credibility at the international fora. Our myriad achievements in the field of sports, education, science and technology, agriculture and development would have not been possible without the collective efforts of our young, dynamic and vibrant men and women. We all must not forget that our independence was won with great sacrifice and struggle, and it is very important for us all to not to fall in the error of taking our freedom for granted.
There are several distinct dimensions in which a youth must equip itself. The very first of them being the physical dimension. Building a great democracy and defending it from the aggressors requires a young generation which is physically strong, with muscles of iron and nerves of steel. And for that, we must undertake the physical training and fitness to the maximum extent possible. Our defense is to a large extent a matter of dogged physical endurance. Our army men has proved magnificently on the battlefield and emerged victorious against the most superior and sophisticated war equipments. The second dimension is intellectual. Today, we live in an age of highly competent science and technology, where we cannot afford the luxury of mediocrity if we are to forge ahead. This rapidly changing nuclear era demands our youth to be far more alert and competent than our predecessors. Therefore, every young man and woman studying in schools, colleges or universities must aim for the academic ability of the highest order. The third dimension is patriotism. Here, we are not concerned with the regular meaning of this term, but with that deeper patriotism which is above all exclusiveness and pettiness. That patriotism which instills in our young minds the urge for national progress and unity. For that, we should show our whole patriotism for the national flag there. The third dimension was the patriotism, of course. And finally, there's a spiritual dimension in which I think is the main faculty that distinguishes human beings from the other life forms found on this planet. At the time of deep crisis, we connect ourselves to a spiritual fervor which ultimately leads us to that fearlessness and dynamism whereby we can overcome all our difficulties. We live in an era where our young minds faces challenges that our forefathers have never faced. And the question is that can a nation which was founded on the principles of equality, justice, fraternity and liberty survive this nuclear age? The destiny has given us the privilege to be answered to this momentous question. And we are confident that the young men and women at PPS will not have been found wanting if the history of this turbulent era comes to be recorded. Jai Hind.
सत्कारयोग हेडमास्टर साहब, स्टाफ, मेंबर्स, प्यारे बच्चे, उन्होंने पेरेंट्स के लिए आए। सब तो पहला तो आज आजादी दिवस की मैं सारे बहुत ही मुबारकबाद दूंगा। उसी बच्चों बहुत ही लकी हो कि स्कूल पढ़ रहे और बहुत अच्छे टीचर साहबान मिले। एक स्कूल है जिसने पोलिटिकल योद्धे जर्नलिस्ट पैदा किए हैं, इसलिए मैं लकी समझता। आज मैं दो तीन गल्ला करनी जरूरी समझा। इस तो पहला मैं डॉक्टर साहब का बहुत ही धन्यवाद करना कि जिन्होंने मैनू तुहाडे नाल दो गल्लां करन दा मौका दिता। नाल जो प्यारे प्यारे बच्चों ने हुण परफॉर्मेंस की है, ये देखने का मैं बड़ा अच्छा लगे स्कूल जाके। अज तुहाडे कोलों दो मैं वादे लेके जाने हैं। इस तो पहला अज के आज़ादी के दिवस से जिस तरह सब तो ज़्यादा जो योगदान पाया वो साढ़े पंजाबियों ने पाया, जो कि साड़ी गिनती देखी जाए तो 2.1% है। लेकिन आज़ादी में अगर किसी ने शहीदियाँ दित्तियां, जेलों कटियां, जजियां के केसेस गए हैं, तो उन्होंने गिनती देखी जाए तो 81% है। और पंजाबी जो पंजाबियों की देन सिर्फ इत्थे ही खत्म नहीं होती, हर पासे असी सब तो अगे हैं। क्योंकि मैं दुबई च उत्थे मुस्लिम कंट्रियां में ये गल आम हो गई सी कि जिन्ने भी पंजाबी है, स्पैशली सरदार, जिन्होंने सिर्फ लड़ाई झगड़े या शराबा पीनिया फैसटिवल के उत्ते, इस तो इलावा कोई काम नहीं आता। सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट वालों असली एक स्टैप चुके आज 2-3 साल पहला, जिहदे बच्चे बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए। मैं मीटिंग की अपने हेल्थ अथॉरिटीज नाल कि दसो घटी कोई प्रॉब्लम इतने दी। सो उन्होंने ये दसिया कि इसलिए रमजान का महीना आता है, एक महीना होता है साल के जो कि मुसलमान सारे रोजे रखते हैं ईद तो पहला। उन्होंने दिनों चुके उत्थे थैलीसीमिया के बहुत पेशेंट ने और ब्लड की बहुत लोड़ होती है। एक महीना वो है जो वो रोजे रखते हैं तो फिर ब्लड नहीं दे सकते, डॉक्टर अलाउ नहीं करते कि रोजे में ब्लड लिया जाए। फिर मैं उन्होंने ऑफर दी है कि ठीक है, असी पंजाबी लोग सारी संस्था बनी हुई है सरबत दा भला, असं दोनों ब्लड दे आएंगे। तो उन्होंने गल जी थोड़ी ना अणगौली जी कर दी कि ये तो बंदे लड़ाई झगड़े वाले ने, इन्होंने एक ही ब्लड देंगे। और मैंने बड़ी खुशी होती है। उन्होंने कहा गया कि तुम डॉक्टर की टीम भेजो। उन्होंने 8 डॉक्टर की टीम जी जो स्टाफ ने भेजी। मैं अपने इतने होटल के हॉल के मैडिकल कैंप लगाया, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया और अपने कंपनियों में मैं एक सिर्फ लैटर भेजी कि अज ब्लड की लोड़ है मुस्लिम कंट्री वास्ते। तुम हैरान रह जाओगे कि 450 पंजाबी अपना जरा सी वो फॉर्म भर के फॉर्मेलिटीज पूरी करके लाइन च लगाए। साढ़े 8 बजे डॉक्टर ने ब्लड लेना शुरू किया तो रात 12-12:30 बजे सिर्फ 150 यूनिट ब्लड का लै सके। वो जो जान लगे कि वो मन गए इस गल कि नहीं पंजाबी किसी वालों घट नहीं। वो दिन गया अज तक होता रमजान महीना पिछले महीने से असी हर साल जो पंजाबियों वालों 1200 को लैके 1500 यूनिट जो ब्लड का असी हर साल दे रहे। हूँ उन्होंने नजरिया चेंज है कि नहीं पंजाबी जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, बाकी काम करते हैं, तो ब्लड देने के लिए सब हो गए। सो पंजाबी किसी वालों भी असी घट नहीं है, सानू पंजाबी खुदा एक मान है। सैकेंडली एजुकेशन के उत्ते मावां का
लाइफ में बच्चों मैं कहना कि ये एजुकेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि मैं अच्छी तरह समझ सकता और अज इस उम्र च आके जो कि मेरे को 800 तो उत्ते मेरे वर्कर मेरे को काम कर रहे हैं, लेकिन मैं खुद नहीं पढ़ सकिया। घरदे ने बड़ा जोर लाया पढ़ने वास्ते, लेकिन मैं 10 तो उत्ते नहीं पढ़ सकिया। मेरा रुझान होर पासे सी, क्योंकि मेरे दिमाग में तो गल चलती सी कि पढ़ के की करना है, BA कर लाँगे, MA कर लाँगे, उस तो बाद फिर क्लर्क ही लगना। लेकिन ये गलत सी। मेरी सोच सी कि नहीं पढ़ना नहीं है, मैं इंजीनियरिंग लाइन जावांगा, बिजनेस जावांगा। सारे खानदान कोई बिजनेस नहीं गया, तो मेरे फादर ये कहते थे कि सारे खानदान किसी ने बिजनेस नहीं किया। मेरे फादर साहब इंजीनियर से, मेरे ग्रैंड फादर साहब हेडमास्टर से, तो वो कहते सारी लाइन तो यही है सर्विस साड़ी तो तुम्हें नौकरी ही करनी है। मेरा दिमाग सी नहीं, चलो मेहनत की। एक मेरा टीचर से जो मैं तुम्हें कह के चाहता कि छोटी उम्र तो एक आप मिथ लीए कि असं कितने जाना है, तो तुम अपनी मंजिल जरूर पूरी करोगे। मेरे दिमाग से मैं बिजनेस करना और मैं बिजनेसमैन बनया, करोड़ों रुपया कमाया, लेकिन एक जी कमी जी एजुकेशन की रह गई, वो मैंने होर तक महसूस होती है। वो एग्जाम्पल बैठे दिना, फॉरन कंट्रीज के गोरे आते हैं, सारिया कॉन्फ्रेंस होंगे ने, सारिया मीटिंग होंगे ने, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू देख लो या अदरवाइज देख लो। उत्थे एक स्टेज आ जाती है जिथे मेरी इंग्लिश मुक जाती है। उदों मैंने महसूस होता कि जे मैं उदों पेरेंट्स का कहा मन के अगर पढ़ लेंदा, पढ़ के फिर बिजनेस जाता तो होर तो अच्छा रहना सी। दूसरा उस तो बाद ही फिर मैं शुरू किया कि नहीं, जो मैं आप नहीं पढ़ सकिया तो मैं एजुकेशन के सैक्टर में जिन्ना वध तो वध हिस्सा लै सका मैं लवांगा। सब तो पहला मैं 2004-2005 में तलवंडी साहब जो पंजाबी यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज है, 2004 में मैं 19 बच्चे इंजीनियरिंग दे रहे थे +1 करके 4 साल इंजीनियरिंग से उन्होंने अडॉप्ट किए उस टाइम से। 19 बच्चों में जो 14 लड़कियां सी और 5 लड़के जो सारे इंजीनियर बन के आ चुके। आज सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट वालों तकरीबन असं 1250 बच्चे जो हायर स्टडी के अडॉप्ट किए हुए हैं, जिन्होंने असी सारी फीसिस है चाहे 50% है, चाहे 75% है, चाहे 25% है, वो देख रहे हैं कि पेरेंट्स कितना दे सकते हैं, कितना कर सकते हैं, वो शेयर कर रहे हैं। तो मैं कुछ नहीं मंगना चाहता, सिर्फ मैं यही कहना कि जिस तरह अपने हम 1100 बच्चे ऐसे स्कूल जो है, तुम एक हवाला मारो चौथी जमात तो लैके 11वीं तक 12वीं तक स्टूडेंट है। एक नवा तजर्बा कह लो है, तुम ये मन ठान लो कि हर बच्चे ने जी जमात पढ़ना है उन्हें पैसे रोज एक साइड पर रखने। जिदा असी बचपन में गोलक रखते हैं, वो गोलक अस तोड़ नहीं सकते, मिट्टी बनी होती सी, जो पैसे अंदर पै गए फिर वो कढ़ नहीं सकते, वो सेविंग होती सी। तुम ये करो जिसने आप चौथी तक आगे 12वीं तक असं एवरेज कढ़ांगे तो तकरीबन साढ़े कुछ बच्चे देंगे कुछ नहीं देंगे, तभी साढ़े 6 रुपया एवरेज साढ़े आती है रोज की। सो 1000 बच्चा भी देवे तो 6000 रुपया जो एक रोज की सेविंग होगी। एक महीने 1,80,000 हो गया। ये साल तकरीबन आलमोस्ट 22 लाख रुपया सेविंग साल के और इस 22 लाख में की कर सकते हो। गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चे जब वो बच्चे जिन्हों के पेरेंट्स 10वीं के बाद नहीं पढ़ा सकते, बच्चे पढ़ना चाहते लेकिन पेरेंट्स फाइनैंशियली इन्ने वीक होंगे कि वो नहीं पढ़ा सकते, और वही बच्चे ने जोड़े पढ़ नहीं सकते, किसी टैक्नीकल ट्रेनिंग नहीं ले सकते, वो बच्चे हम अगे नशा में पैदे हैं क्योंकि उन्होंने अगे नजर कुछ नहीं आता। असं एक शुरुआत इस स्कूल तो करिए, अगर तुम इन्ने पैसे 4 रुपये 5 रुपये छेड़ दिए कोई बड़ी गल नहीं है, रोज दे देने कि असं हज़ारों रुपये खर्चा कर रहे हैं। और इसे अमाउंट के नाल जिसलिए असं 1200 बच्चा हायर किया है, अडॉप्ट किया है जी, साड़ी जी एवरेज है तकरीबन 18 तो 20,000 रुपये एक बच्चे की आती एवरेज है। चाहे असं टीचिंग कोर्सेज करा रहे हैं, चाहे नर्सिंग करा रहे हैं, चाहे असं मैडिकल करा रहे हैं, इंजीनियरिंग करा रहे हैं, या कोई भी हायर स्टडी करा रहे हैं, इस तो उत्ते खर्चा नहीं आता। तो जो 22 लाख रुपया इकट्ठा हो गया, वो 18-19 लाख रुपया पा के 100 बच्चा हर साल अडॉप्ट कर सकते हो, वो बच्चे जो पढ़ नहीं सकते। प्लस जो बाकी बच्चे हम जो सैकेंड फादर बनता है वो बनता पेरेंट्स ने, जिन्होंने पेरेंट्स ने जन्म दिता,
इस लाइफ बनाया तो स्कूलों अच्छे स्कूलों से भेजा और इस स्कूल जो तुम जाके किसी ने आर्मी जाना है किसी मतलब अच्छी अच्छी जगह तुम जाना है उन्होंने पेरेंट्स लिए तो जो वो भी एक बहुत फर्क पड़ता है वीडियो देख लो तो अपने पेरेंट्स है उस तो बाद आंढ गुआंढ है मोहल्ले में है शहर है डिस्ट्रिक्ट है सरबत दे भले असी स्कीम शुरू की थी ऑपरेशन जिन्हें कि नजर दे रहे हैं जो नजर नहीं है सो तुहाडे फंड विचों ही मैं उन्हीं की गल कर रहा है तुहाडे फंड दे विचों ही जिथे तुसीं 100 बच्चे नूं तुसीं अडॉप्ट करोगे हायर स्टडी वास्ते नाल दी नाल तुसीं 100 ऑपरेशन नहीं कराओगे उन्होंने लोगों के उन्होंने अखां दोगे उन्होंने नजर दोगे इसे अमाउंट विचों और वो जो ऑपरेशन है मोतिया के ऑपरेशन होके प्लस उन्होंने लेंस पाए जाने तो 100 ऑपरेशन तुसीं वो कर सकते हो इन्ने करते इसलिए जी रिक्वेस्ट है सारे कि तुसीं 4-4 रुपये 5-5 रुपये पा के ये सोचो कि ये तुसीं इन्ने पैसे करे कित्थे पहुंच जाते हो तुसीं हर साल जे इन्ना 100 ऑपरेशन है 100 तुसीं बच्चे नूं अडॉप्ट करोगे छोटी मोटी गल नहीं बहुत बड़ी गल है चैरिटी जी है वो बचपन तो ही आनी चाहिए मंच करनी चाहिए कोई भी ऐसी चैरिटी करते हैं आज असीं करोड़ों रुपये खर्चते हैं ये नहीं कि मैं आज चैरिटी शुरू की है कि मैं आगे अपनी जमीन बेच के करके मैं चैरिटी कर रहा करोड़ों रुपये खर्चे नहीं जो मैं बिजनेस स्टार्ट किया जिस तरह अनुभव ने कहा कि अपने एक्सपीरियंस पर लगाया जो मैं बिजनेस स्टार्ट किया मैं उस दिन तो दसवां करना शुरू करता और उस साल सेम गवर्नमेंट पाने की गल से मैंने छेड़िया नहीं थी मैं 25 साल पुरानी गल कर रहा लेकिन उस दिन तो मेरा पैसा इकट्ठा होना शुरू हो गया अज अगर मैं 10-12 करोड़ रुपये हर साल जो मैं चैरिटी कर रहा ये मैं तो अपने जेब तो नहीं दे रहा ये वही पैसा है जो कि मैं शुरू तो लैके हम तक जमा करता आया वो अज मौका है अज मैं जेब खोल के वो पैसा आ रहा है इस पैसे के मेरा कोई हक नहीं है इसी तरह दूसरी पैसा इकट्ठा करोगे तो थोड़ा कोई हक नहीं दूसरा एक संदर्भ बोलो पास वाले खत्म कर देगा अगे थोड़े टीचर साहबान सारे ये सारे बोल कर रहे हैं तो इस तरह की गल्लां बच्चे दुनिया है वो करो बाकी लगे बच्चों की गल हम तो छोटी जी गल दसना एजुकेशन के बारे में मैं तलवाड़ा टाउनशिप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़िया उदों को एजुकेशन होया करता सी बाद में चेंज होया तो उत्थे मैं स्कूल से गया तो जाके जब प्रिंसीपल सर ने कहा कि मैं उत्थे गया तकरीबन 52 साल बाद प्रिंसीपल सर ने पूछा गया जी स्कूल तो उदय सीगा पुराना जिस तरह का ढांचा से वही रहा टीचर साहब ने बुलाया सारा मीटिंग की मैं कई तुहाडे बच्चे में दसो कि किन्ने बच्चे तुहाडे जिहड़े आ वो अच्छे नंबर लैके आ रहे हैं जिहड़े कि आ रहे हैं कि मैरिट किन्ने बच्चे आ रहे हैं वो हंस के गल टालती उन्होंने कहते सारे बच्चे पास हो जाते हैं मैरिट वाल तो सोचा ही नहीं कि डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर का स्कूल है 3 साल पुरानी गल कर रहे हैं फिर मैं बच्चों को बुलाया कि बच्चे तो कहते नहीं मैडिकल के बच्चे है वो सारे अच्छे अच्छे कर रहे मैं बुलाए बच्चे दो तो एक बेटी सी जी मैडिकल कर रही मैंने पूछा मैं बेटा तो कितने किलो बदलने कहते अंकल मैं पिछली बार 60% ली थी मैंने तो मैडिकल रखा 60% मार्क्स तो कुछ नहीं है वो जवाब बड़ा अच्छा सी कहते अंकल की करेंगे नंबर 60% हो या 95% हो मैं बेटे बड़ा फर्क है तुम मैरिट चाहोगे कहते अंकल इतों निकलने तो बाद असी घर रह जाए मेरे फादर 84 है एक होर बेटी मेरे फादर कहने घर पुत्र वाले है वो चीज़ नहीं एक्चुअली पढ़ गई यही बड़ी बड़ी गल है इसके बाद सारा विआह करना जब असी पढ़ना ही नहीं अगे तो फिर नंबर 60% हो या 95% हो सानू की फर्क करता है वो गल बड़ी कहती कि मैं नहीं बहुत गलत गल है उस साल मैं बच्चों को कहा मैं बच्चों नहीं पढ़ने तो जोड़े बच्चे मैरिट चाहते उन्होंने सारी एजुकेशन का खर्चा लेना वो सारा अपना चैरिटेबल ट्रस्ट होना किया जाएगा तुम हैरान रह जाओ शायद पेपर पढ़े नहीं होंगे पिछले साल 4 बच्चे मैरिट चाहिए और वो स्कूल जो फर्स्ट आया डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर का रिकॉर्ड तलवाड़ा टाउनशिप गर्ल्स स्कूल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल फर्स्ट आया 4 बच्चे चारों बच्चे इसमें टॉप किए हैं लास्ट ईयर उन्होंने बच्चों में 2 बच्चे फिर रहे हैं वो मैरिट चाहिए सो एक मोटिवेशन देने की गल है हूँ जो साढ़े सरबत दे भले ट्रस्ट वालों असी डिस्ट्रिक्ट वाइज साढ़े ऑफिस खुल चुके हैं और असी हर डिस्ट्रिक्ट में टीमां बना दी ने जोड़िया कि बच्चों को जाके 9वीं 10वीं जमात में असी हूँ उन्होंने दसया कि बच्चों तुम अपना सेहत लो एक देखो तुम टीचर देखो कि तुम कितने पहुंचना कितने अगे तो बाहर असी सरबत अपना चैरिटेबल ट्रस्ट करेगा ज़्यादा दूर मेरा गवर्नमेंट स्कूलों के सब्जेक्ट जोड़े नहीं पढ़ा सकते तो हूँ सारी टीमों पर जा रही है क्योंकि बड़ी सिंपल जी गल है अगर असं 11वीं के बच्चों को जाके कहेंगे कि बच्चा चाह तू डॉक्टर बन जा तू इंजीनियर बन जा कितों बनूगा तो बेस ही है अगर यही चीज़ असं जो 9वीं के बाद उन्होंने दसा कि नहीं बच्चा तुम देखो जी कितने पहुँचना तो आज तो तैयारी करनी शुरू करो और असं जो पूरा साथ देंगे तो असं पंजाब में जिते अज अं कह सकते हैं कि साढ़े 83-84% बच्चे जो पिंडा बैठे जो नहीं पढ़ सकते
यूनिवर्सिटी पिछले का सर्वे होया सी 1.5% बच्चे सिर्फ सारे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। सो ये आप शुरू की है सर्वे के वालों ने शुरू की है और मैं दावे नाल कहना कि होर 6-7 साल 8 साल बाद ये गिनती है ये उल्ट हो जाएगी। इतने 86% बच्चे पिंडों के बैठे ने मेरे सामने 86% बच्चे सारे पढ़े लिखे होंगे। जोड़े बच्चे बाकी रह गए जो पढ़ना नहीं चाहते मेरे वर्गे उन्होंने वास्ते असं हर डिस्ट्रिक्ट में इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जिथे असी कारपेंटर मैसन प्लंबर हो गए स्टील फिक्सर हो गए इलैक्ट्रीशियन हो गए असी ये 6 महीने के कोर्सेज करा रहे हैं कि ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए क्योंकि नशे जो इन्ने बढ़ चुके पंजाब के असं नशे का हल नहीं पा सकते। अगर अभी सेंटर खोल देंगे कि जो नशा स्टॉक केंद्र खोल देता है कि बच्चा होगा नशा स्टॉक चल जाएगा ये हल नहीं है। हल सिर्फ एजुकेशन नहीं है। बच्चा पढ़ लेगा नशा नहीं जाएगा। अगर बच्चे के हाथ में हुनर आ गया कि हाँ मैं प्लंबर वाला काम कर सकता अभी प्लंबर कितने मिलता समझदार है बाथरूम जाओ पानी जाओ कोई आप ही साफ करना अंदर प्लंबर थोड़ा मिलते ही नहीं। सो ये हुनर बच्चे के हाथ आ जाएगा बच्चा कहीं नशा नहीं जाएगा। तो इस करके मेरी फिर कम ये है कि एजुकेशन बहुत जरूरी है। बच्चों को अंदर उसका मौका मिल जाए और तुम पढ़ के खाओ प्रॉमिस करो कुछ ऐसे सारे करके गोल खुलाओगे और खुला के फिर अगले साल में दसोगे कि अगर असी इन्हें इकट्ठे कर लेने कौन सा रजिस्टर है तो सीक्रेट के बच्चे असी बनाओ। सो रिक्वेस्ट है सारे लोग मेरे लोगों को Thank you, sir. I now request our lead master to present a token of love and appreciation for Honorable Chief Guest. Thank you, sir. I now request our lead master to propose a vote of thanks. Sardar Singh Oberoi, the chief guest for the 67th Independence Day of our country. I welcome you to PPS, sir. I'm blessed and honored and humbled to have you with us on this wonderful occasion when the whole country is celebrating independence. Here is a man, high yet so humble, an icon by himself, yet down to earth, who has given a new meaning to us after 67 years of freedom, what actually is freedom. First of all, I'm very thankful to Mr. Gagan and Mr. Puri for having me connected to such a legend. I think had you people not been there, I would have never established a connect with Oberoi sir. Thank you for linking our school to such a personality. I visited Dr. Sardar Oberoi's office a month back, and unknown what this person is, had heard a lot about him, had read a lot about him, and when I Google searched, the Google also ran short of words explaining what he is doing for the humanity. I thought I have discovered my chief guest for this independence. But it was only after I met Oberoi ji in his office in Patiala. My first meeting with him over a glass of lassi in your office, sir, connected me to this man, to his roots. I knew this is the man to be connected for our students. A man with unlimited power of finance, but looking for wisdom for the children. Children, I ask you, what is freedom? Is freedom what is written in the Constitution of India? Or is freedom changing its meaning in today's life? Children, after I met this legend, I learned a new meaning of freedom. Freedom means freedom of mind. Freedom means freedom of thinking. And more important,
freedom of our spirit. I think it's very important for each one of us, especially on my left, the gentle ladies who are sitting there. If you know about this man, and if you have heard about this man, and if you would like to search about what he is doing, he is an icon who has promoted girls' education and girls' welfare, not only in India, not only in Punjab, not only in Dubai where he has an empire, but all around the globe. And when he was honored as the Sikh of the Year by the High Commissioner in England, it was solely because his work done for the girls in humanity. So we are humble. Today when we are celebrating Independence Day and we remember our patriots, we remember the Shaheeds, we remember Bhagat Singh, we remember Udham Singh, we remember Lala Lajpat Rai, we remember Chandrasekhar Azad. But what's the point of remembering those people who have given away their life and have gone dead into their graves? Children, it does not mean celebrating freedom by remembering them. Children, Independence Day is not listening to the patriotic song, Sare Jahan Se Acha Hindustan Hamara. Prove it. And how will you be able to prove it? By doing what these legends are doing, and still do not want to take the credit. The biggest asset with this man is, he is like that giant tree who has been giving fruits to the people. And more the fruits coming, more he bends down. So humble. And take away from me whatever you want, but give back to my country strength. Give back to my country the future. Give back to my country literacy. Give back to my country gender equality. Give back to my country equality. Give back to my country the honor of being the best nation in the world. That is all he demands for. Today, Sarbat Da Bhala Charitable Trust is investing a huge amount on the youth of India, because they are the future resource of India. Today, Sarbat Da Bhala also has an advocated policy. If today I invest on the young minds, they will be the global leaders of tomorrow. My investment in my country is right, says Oberoi Sahib. How did he get this noble idea? I was talking to him while sitting in my office this morning, and I learned his father, as he just mentioned, he comes from an education family, headmaster, and of course mechanical engineers. But when his father forced him to study, he thought that was a waste of time. Why are they forcing me to sit in the classrooms and be tortured? With great difficulty, his father made him pass class 10. And then he did not want to study. They made him sit for the engineering. They said, at least do a diploma. And with great reluctance, he says, I completed 9 months of diploma. Today, he has a team of 800 people in his office in Dubai and 25 centers in the world. He has more than 60% white-skinned people with whom we were the slaves yesterday are working with him in his office, taking salary from him. Children, the history of India is very, very shameful. We have to learn from it. After 13th century, India never had a native ruler. After 13th century, if you go back, we were never ruled by an Indian. Whether they were slave dynasties who came from Iltutmish to Qutbuddin Aibak, or going to Tughlaqs, or going to Khiljis,
or going to Lodhis. And after the Lodhi dynasty came the mighty Mughals. Babur, who was called from Persia by Sikandar Lodhi, that please come and fight with Ibrahim so that we can win. And Rana Sanga lost the war to him. And then begins the era of Mughals. And soon after the Mughals came out, came the East India Company in 1757. And ruled for 100 years, till the first mutiny, the revolt of 1857. And then we lost that too because of our own ignorance. Another 90 years on the British crown. Till 1947, we got our independence. We have paid a lot. We have paid a lot of being slaves to the foreign rulers. Why were we so? Because of ignorance. Because of lack of wisdom. Because of lack of leadership. Today India is emerging as a superpower. If America is threatened after China, it is only India. Why? Not that India is a golden bird, no more India is a sone ki chidiya. India today has the largest resource in the world. Largest, the human resource. But unfortunately for India, this human resource is uneducated. If this resource remains uneducated, it will become a liability to India. Educate them, enrich them with wisdom, with knowledge, and they'll become an asset of tomorrow, which no country can snatch from us. The top engineers, the top scientists, the top people sitting in NASA are all from India. They are running the show for other countries because India do not give them opportunity. And here is a man who wants to give opportunity to the Indians because he wants an Indian to be a global leader tomorrow. Children, I'll take you back to Srimati Indira Gandhi's time. It was when Rakesh Sharma as an astronaut went up to the space. And he had landed there and was taking some photographs. And the scientists came to Srimati Indira Gandhi, who was the Prime Minister then, and said, "Ma'am, Mr. Sharma has reached up. He wants to establish a dialogue with you, ma'am. Do you wish to talk to him?" They took her to the aeronautic lab, where they connected her to Rakesh Sharma. And the only question what Srimati Indira Gandhi asked him, "Sharma ji, ऊपर से भारत कैसा लगता है?" And you know what he said? "Ma'am, it looks so good. I can only tell you, ये है दुनिया की शान, मेरा भारत महान." And that was the only dialogue. That was the only dialogue what he made with Srimati Indira Gandhi, and Mrs. Gandhi started crying. She could not make a speech after that. And she left the room. And she came back. And she talked to Rajiv Gandhi then and said, "Son, in physical form my country is very rich. Talk about the climate, it is in India. Talk about the topography, it is in India. Talk about vegetation, it is in India. If India comprises the whole world, then why my world is not recognizing India?" Somebody has to take the responsibility. Somebody has to take that accountability on the shoulders that I will look after my country. And here are the people like Mr. Oberoi with his wonderful NGO who have taken the responsibility of making the dreams of our forefathers come true. Let not the blood shed by our
veterans go into the soil waste. Let them have the dream what they look for. Today these girls and boys in a wonderful uniform make me feel proud of being the head of this school. Because seeing them in uniform, today I take pride that they are my future. And these young girls and boys today wearing a uniform, whether of Army, Navy or Air Force, I am sure the future of my country is secured. Nobody can even stare at India as long as there are children like this in their uniform protecting Indian territories. But it is also a sole responsibility, as Mr. Oberoi said, of each one of us to get educated. And if you can't afford education, he has a charitable trust. Go to him. Say, uncle, I need help. I can't afford education. I'm sure, just hearing now that you are from PPS Nabha and you cannot afford future education, he'll embrace you under his shelter and will give you a sponsorship. I can take a word from Mr. Oberoi on this. Once again, before I conclude, girls and boys of PPS Nabha, you are into a very sacred land of India, the land of 5 rivers, which has given birth to a civilization. Let the dreams of Lalaji, let the dream of Bhagat, let the dream of Chandrasekhar, let the dream of Udham not die as they have today sat in the graves. Let not their visions die a death of that time. Live in their dreams, live for the future, live for the country, live for the glorification of India. Jai Bharat, Vande Mataram. Thank you, sir. I request you all to please rise.